elastic collision in one dimension. We are going to discuss perfectly elastic collision in one dimension. So this is first body which is moving with initial velocity u1. This is second body moving with velocity v2. Its mass is m1 and its mass is m2. And this is the condition before collision, right? So these two bodies, they are moving with initial velocity u1 and u2. तो ये कब मिलेंगे आपस में? अगर u1 u2 से ज्यादा होगा, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो आगे वाले को, जैसे आप साइकिल पे जा रहे हो एक आगे और एक पीछे, तो पीछे वाला आगे वाले से कम मिलेगा इवन पीछे वाले की स्पीड ज्यादा हो। तो यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, and when u1 greater than u2, then a time will come when the two bodies collide, that is during collision. And after collision, what happens? The two bodies will separate out, and two will separate out if velocity of second body is different. And after collision, their velocity changes. इसकी v1 हो गई और इसकी क्या हो गई v2. And here they will separate out if v2 is greater than v1. नहीं तो ये separate नहीं होंगी. Again, we have two bodies A and B, masses m1 and m2. लिख लो आप. Consider two bodies A and B. Consider two bodies A and B having masses m1 and m2. Consider two bodies A and B having masses m1 and m2 and moving with initial velocity u1 and u2, moving with initial velocity u1 and u2, full stop. If paragraph change करके, if u1 greater than u2, then the two bodies collide. And after collision, their final velocities becomes, v1 and v2. Their final velocity becomes v1 and v2, full stop. The two bodies will separate if v2 greater than v1. The two bodies will separate if v2 greater than v1. ओके अच्छा, एक बार जरा पढ़ के सुनाना. मैंने नहीं, मैं ही बोलता हूँ. Consider two bodies A and B having masses m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2. यहाँ तक लिखा था ना? u2 yes, के बाद दो तीन शब्द और जोड़ दो, v1 and u2 in a single line, in a single direction, in the same line, in a single direction. ये मैंने क्यों लिखा? Because I am discussing one dimension. तो वन डायमेंशनल में दोनों को एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए. Now why we are discussing this first of all? कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? जिसको मालूम है, actually this is our course, so we are studying. But फिजिक्स के हिसाब से हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि when such a collision occurs, then after collision what will be their final velocity and how to find the final velocity. And we can find final velocity with the definition of collision, elastic collision. You know very well. In perfectly elastic collision, both linear momentum and kinetic energy remains conserved. तो बस यही खेल खेलेंगे और हमको सब आ जाएगा. तो नीचे लिखिए, we know that
we know that in perfectly elastic collision, both linear momentum and kinetic energy remains conserved. Both linear momentum and kinetic energy remains conserved. So from law of conservation of linear momentum. So linear momentum conservation means initial momentum is equal to final momentum, right? Initial momentum means momentum of both the bodies. So first body momentum is mass into velocity, that is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, तो m1 वाले एक तरफ कर लो, तो u1 minus v1 and this is v2 minus u2. This is our equation number 1. Correct? Then from law of conservation of energy या kinetic energy एक ही बात है, kinetic energy. So here kinetic energy initial is kinetic energy final, that is half m1 u1 square half m2 u2 square half m1 v1 square half m2 v2 square. किसी का माइक ऑन है, इसके पेजेस की आवाज आ रही है, तो ऑफ कर लो. थैंक यू. नाउ हाफ हाफ साफ, दोनों तरफ से हाफ हाफ साफ हो गया. और m1 वाले एक तरफ ले आए, m1 is u1 square minus v1 square and m2 is v2 square minus u2 square. This is my equation number 2. नहीं, थोड़ा सा और ठीक करते हैं, because here mathematics formula is there. A square minus b square is a plus b, a minus b. Here also a plus b, a minus b. और हम किसकी सर्च में, आपको पता होगा, वी आर इन सर्च ऑफ फाइंडिंग v1 एंड v2. v1 और v2 हम निकाल रहे हैं, सब दोनों को डिवाइड करेंगे. तो लिखिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. तो अभी जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको पता है, एक टर्म तो कट जाएगी ना सर. प्लीज साइड फोटो लेंगे. ले लिया? यस सर.